Good evening, everyone. Good evening, everyone. I'm Dr. Aditya, and today we are here to do the oral radiology part of this Predictor series. So, we all know that the exam is upcoming, and I know most of you are well prepared. अच्छे से सारी चीज़ें clear है, सब कुछ है, but the faculty at DAMS is here help you revise some important questions that you might get in the upcoming exam or get the same pattern of questions in the exam. Okay, so all faculties are doing their best to find out the best questions for you which are helpful. Okay, and what I have tried and do is take a mix of questions that are visual as well as questions that are theoretical based, and my questions are based on the previous year question papers. Okay, so these questions are very important, so I might have changed the language just a bit. Okay, and there might be more than one answer in few questions. Okay, so let's start without wasting our time because we just have 1 hour to revise. Okay, so today's session, oral radiology. Again, one more thing I would like to add is in oral radiology, every year there are around 8 to 9 questions that come. Okay, it might be a question less or it can be a question more. Okay, but around 8 to 9 questions are seen every year from the oral radiology. So predictor series is something that you know will help you concisely revise. बिल्कुल आपको exact तरीके से revise करने के लिए बनाई गई. Okay, so let's start. So the first question: film contrast is determined by. What do you mean by film contrast? तो आपके सबसे पहले तो सबसे पहले फिल्म कॉन्ट्रास्ट. ठीक है, सो बेसिकली इट इज नथिंग बट इमेज कैरेक्टरिस्टिक. इमेज कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आपका डेंसिटी आता है, इसके अंदर आपका कॉन्ट्रास्ट आता है, इसके अंदर आपका लैटिट्यूड आता है, इसके अंदर आपका स्पीड आता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर. तो अब हमसे पूछा गया है कि फिल्म कॉन्ट्रास्ट को क्या क्या चीजें डिटरमाइन करती हैं, कौन सी चीजें डिटरमाइन करती हैं हमारे कॉन्ट्रास्ट को. ओके, तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि क्या मेजर चीजें हैं जो हमारे फिल्म कॉन्ट्रास्ट को डिफाइन करती हैं. द फर्स्ट थिंग दैट डिफाइंस कॉन्ट्रास्ट इज किलो वोल्टेज, ऑल्सो नोन एज केवीपी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. दूसरा, development of film, whether the developer and fixer are new, what is the temperature of the developer and fixer, are they contaminated or are they old. ये सब चीजें डिपेंड और डिजाइन करती हैं आपके फिल्म के कॉन्ट्रास्ट को. तो सबसे पहले आते हैं किलो वोल्टेज. सो योर कॉन्ट्रास्ट is inversely proportional to KVP. Contrast is inversely proportional to KVP. Okay.
मतलब increased contrast, or also known as short scale of contrast, is defined by lower KVP. KVP कम, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा, और उसी को हम हाई कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं या शॉर्ट स्केल ऑफ कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, ठीक है। और अगर लो कॉन्ट्रास्ट है मतलब लॉन्ग स्केल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ओके, तो वो होता है हाई केवीपी की वजह से। तो ऑल एंड ऑल KVP is inversely proportional to contrast. Clear? Okay. New developer and fixer, high contrast. Okay. Old developer and fixer, low contrast. Contaminated solution, low contrast. Yeah? तो वो डेवलपमेंट में आ गया अपन। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो फिल्म कॉन्ट्रास्ट इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ फिल्म यूज्ड, द प्रोसेस बाय विच द फिल्म वाज डेवलप्ड, द रेडिएशन एनर्जी यूज्ड। तो रेडिएशन एनर्जी से इतना कुछ पता नहीं लगता, रेडिएशन एनर्जी का इतना कुछ रोल नहीं है, बट द टाइप ऑफ फिल्म यूज्ड, फास्ट फिल्म, आपका E और F स्पीड फिल्म, इनमें कॉन्ट्रास्ट हायर होता है। द प्रोसेस बाय विच द फिल्म वाज डेवलप्ड, सो बोथ A and B, आंसर बोथ A and B, okay, this will be the answer. Next, hypoplastic defects in the enamel appear in radiograph as hypoplastic. क्या बोल रहे हैं? हाइपोप्लास्टिक। अगर हाइपो होगा तो रेडियोल्यूसेंट होगा, अगर हाइपर होगा तो रेडियो ओपेक होगा, ओके। तो हाइपोप्लास्टिक डिफेक्ट्स इन द enamel appears in radiograph as brown spots running horizontally, no. Radiolucent areas, yes. Sclerotic areas over the surface of tooth, no. Sclerosis again is आपका रेडियो ओपेक, और रेडियो ओपेक एरियाज, नो, ओके, दैट इज अगेन हाइपर प्लास्टिक। ठीक है, तो hypoplastic defects in the enamel appear in radiograph as brown spots running horizontally, radiolucent areas, sclerotic areas over the surface of tooth, radiopaque areas. The correct answer is option B, radiolucent areas. Hyperplastic will appear radiopaque, will appear radiopaque. Next, onion peel appearance on radiograph is not, क्या पूछा है? किसमें नहीं दिखता है, ओके, ऑल एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये। तो अनियन पील अपीयरेंस ऑन रेडियोग्राफ इज नॉट सीन इन, द फर्स्ट ऑप्शन इज Gary's osteomyelitis. Is it seen in Gary's osteomyelitis? Is onion peel appearance seen in Gary's osteomyelitis? Focal sclerosing osteomyelitis, the other name, focal sclerosing osteomyelitis, is it seen in that? Yes. Onion peel appearance is a periosteal reaction. So one over the other thickening of the periosteal layer sometimes in radiograph appears as onion peel appearance.
तो ऑप्शन ए गैरीज ऑस्टियोमाइलाइटिस इज करेक्ट, इट इज सीन, बट हमसे क्या पूछा है, इज नॉट सीन। ठीक है। एविंग सार्कोमा, अगेन यस, एविंग सार्कोमा में अनियन पील अपीयरेंस देखी जाती है। ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, yes, onion peel appearance, it comes out as more like sunburst or Codman's triangle in osteogenic sarcoma, but in some stages, in the preliminary या शुरुआत के stages में कई बार onion peel appearance जैसा ऑस्टियोसार्कोमा या ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा दिख सकता है। Clear? So what is the remaining? It is fibrous dysplasia. Fibrous dysplasia. तो fibrous dysplasia कैसा दिखता है? अनियन पील अपीयरेंस नहीं दिखती, इसके अंदर आपको दिखेगा ग्राउंड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास या ऑरेंज पील अपीयरेंस। क्या दिखेगा? ऑरेंज पील अपीयरेंस, इसमें आपको दिखेगा ऑरेंज पील अपीयरेंस, नॉट अनियन पील। अनियन पील हमको बाकी चीजों में दिखता है, ऑरेंज पील अपीयरेंस या फ्रॉस्टेड ग्लास अपीयरेंस या ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ये सब हमको दिखते हैं फाइब्रस डिस्प्लेसिया। क्लियर? ओके। So onion peel appearance on radiograph is not seen in option D, fibrous dysplasia. Okay, fibrous dysplasia. Okay, next question. Sunburst appearance on the radiograph is seen in, अब हमको पता करना है sunburst appearance। पिछली बार अपन ने डिसाइड किया था, देखा था कि ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा में मैंने आपको बताया था sunburst appearance दिखता है, again periosteal reaction। Okay, so first option again we have osteosarcoma, osteofibroma, osteomalacia and osteopetrosis. So correct answer is osteosarcoma. Sunburst appearance on radiograph in an osteosarcoma. So this is how a periosteal reaction of osteosarcoma showing sun ray or sunburst appearance can be seen. Okay, इस तरीके से ये जो आपको आगे धागे जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम सनबर्स्ट या सन रे अपीयरेंस बोलेंगे। यही हमारा ऑस्टियोसार्कोमा में होता है। ओके, क्लियर? ठीक है। अगेन इट इज अ periosteal reaction. It is a periosteal reaction. Clear? Next. Multiple radio opacities. Now what is the examiner asking? Opacities. So there can be multiple radiolucencies or multiple radio opacities.
दोनों चीजें एग्जामिनर पूछ सकता है। हमसे यहां पर पूछा गया है ओपेसिटीज। ओके, सो मल्टीपल माइलोमा में वी सी मल्टीपल punched out radiolucencies, multiple punched out radiolucencies. I'll try and show you how it looks like. So it looks something like this. Okay, ये है एक typical visual for multiple punched out radiolucencies. Okay, this is a true lateral skull radiograph for a multiple myeloma patient. Okay, multiple myeloma patient. चेरुबिज्म में भी मल्टीपल रेडियोल्यूसेंसीज दिखती हैं जॉज में बायलैटरली। ओके, आईज टू हैव एन अपीयरेंस, प्रोमिनेंट चीक बोन्स। ओके, मल्टीपल रेडियोल्यूसेंसीज। हमसे क्या पूछा है? ओपेसिटी। ऑस्टियोपेट्रोसिस, ओके, इसमें भी मल्टीपल रेडियोल्यूसेंसीज। odontomas, this right here, odontomas, multiple radiopacities, multiple radiopacities are seen. So if you see this is a case of complex odontoma, and these are multiple radio opacities that can be seen in complex odontomas. Okay, okay. So odontomas, multiple radio opacities are seen in odontomas. Multiple myeloma is most commonly lucencies, cherubism lucencies. Petrosis is also known as Elber's Schonberg disease. उसके अंदर डेंस बोन हो जाती है, बोन इन बोन अपीयरेंस, तो आजू बाजू कई बार रेडियोल्यूसेंसीज रहती हैं। बट ओडोंटोमास मल्टीपल रेडियो ओपेसिटीज अगर बोलेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर ओडोंटोमा होगा। ओके, नेक्स्ट। Unilocular radiolucency is seen in all except unilocular। एक होता है मल्टीलॉक्यूलर, एक होता है यूनिलॉक्यूलर। ओके, एक गोला यूनि, बहुत सारे गोले मल्टी। तो यूनिलॉक्यूलर रेडियोल्यूसेंसी seen in all except ameloblastoma, yes it is seen. Primordial cyst, yes it is seen.
giant cell granuloma, again unilocular से start होता है and then it goes on to become आपका multilocular. Calcifying epithelial odontogenic tumor also known as pind box tumor. पिन बॉक्स ट्यूमर के अंदर एक और चीज होती है, इट कैन बी एसोसिएटेड विद अ इंपैक्टेड टूथ, और टूथ के ऊपर ड्रिवन स्नो अपीयरेंस, कैल्सिफाइंग अपीयरेंस रहता है, कुछ कैल्सिफिकेशंस रहती है. तो इट इज नॉट एब्सोल्यूट यूनिलॉक्यूलर रेडियोल्यूसेंस. क्लियर? ठीक है. आई लाइक टू शो यू हाउ इट लुक्स लाइक. So this is how it looks like. ये impacted tooth है, इसके आजू बाजू यूनिलॉक्यूलर रेडियोल्यूसेंसी, बट यहां पर आपको फ्लेक्स of calcification can be seen. Flecks of calcification can be seen. Okay, so it is not proper radiolucency. Got it? So unilocular radiolucency is seen in all except calcifying epithelial odontogenic tumor, also known as pind box tumor. An oval radiolucent area between the apices of the maxillary teeth. Oval radiolucent area. So nasopalatine foramen, lingual foramen, again lingual तो नीचे आ गया तो maxilla में उसका काम ही नहीं है, तो ये भी हटाई दो. नेजल फोसा ऊपर की तरफ होता है, मैक्सिलरी इंसाइजर से बहुत ऊपर. इंसिसिव कैनाल बीच में होता है, ठीक है, बट रेडियोल्यूसेंट नहीं होता पूरी तरीके से. So the correct answer here is nasopalatine foramen. Nasopalatine foramen is the correct answer. It is a anatomical landmark. मैं क्यों बोल रहा हूं इंसिसिव कैनाल नहीं होता? बिकॉज इंसिसिव कैनाल में भी आपको चीजें दिखेंगी, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली रेडियोल्यूसेंट. यू विल सी सम अमाउंट ऑफ ट्रैबैक्यूलेशंस इन इट. So if you see here, this area, it is your incisive foramen, not completely radiolucent. Okay. Next, an African American patient shows a radiolucent area. अब देखो, इन्होंने बड़े अच्छे से क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ा हिंट दे दिया. क्या दिया? अफ्रीकन अमेरिकन पेशेंट. ये बहुत बड़ा हिंट है. अफ्रीकन अमेरिकन पेशेंट, नीग्रोइड रेस. Patient shows radiolucent area surrounding the apices of mandibular anterior teeth, which are vital. Second hint, mandibular anterior, central lateral, which are vital. What is the most probable diagnosis? Is it a periapical abscess? Can be. Okay. Periapical granuloma becomes more sclerotic. Periapical cemental dysplasia happens almost exclusively in African American patient. Condensing osteitis, more common in posterior teeth. So the correct answer here is periapical cemental dysplasia. African American patient, vital tooth, mandibular anterior teeth. Okay, clear? So this is important. Clear?
Again, commonly seen in vital and negroid races. Vital teeth and negroid race. Next. Which of the following help in distinguishing an osseous neoplasm and a cyst on X-ray? Size can be anything. Shape helps, but starting में they can look same. Location, again location कुछ भी हो सकती है. सिस्ट की भी कुछ अलग लोकेशंस होती हैं, नियोप्लाज्म की भी कुछ अलग लोकेशंस होती हैं. पेरिफेरल बोन फॉर्मेशन. नाउ दिस पेरिफेरल बोन फॉर्मेशन जो है, ओके, दिस इज सीन मोस्ट कॉमनली इन osseous or odontogenic neoplasms. Okay, peripheral bone formation. In some cyst also it is seen, which are also not known as true cyst, like ABC, aneurysmal bone cyst. Okay, mostly reactive neoplasms जो होते हैं उनमें हमको देखने को मिलती है ये peripheral bone formation. Clear? Next, all of the following will appear as caries in an X-ray. मतलब caries जैसा कौन सी filling materials दिखेंगी except. Okay, clear? This question is slightly framed wrong. All of the following will appear caries in an X-ray. Look, acrylic resin, calcium hydroxide, ZOE, composite calcium hydroxide and acrylic resins are most commonly, they appear as radio opaque, and ZOE appears radiolucent. तो ये थोड़ा सा फ्रेम गलत है, बट आई होप यू गेट द आंसर कि केरीज जैसा कौन दिखेगा आपके रेडियोग्राफ पे. तो इट इज बेसिकली ZOE बिकॉज इट इज रेडियोल्यूसेंट, कैन लुक लाइक दिस. ठीक है, all of the following are radiolucent except, all of the following are radiolucent except ameloblastoma is radiolucent, cementoblastoma is mixed, OKC or KCOT is lucent, CGCG or central giant cell granuloma is lucent. So cementoblastoma is mixed radiolucent, radio opaque. Okay, mixed radiolucent, radio opaque. So this is how a cementoblastoma looks like. Mixed radio opaque surrounded by a thin line of radiolucency. Radio opaque and surrounded by thin line of radiolucency. Again, hallmark of cementoblastoma is wheel poke appearance or cart wheel appearance. Wheel spoke या cart wheel appearance. So this is how a cementoblastoma looks like. Okay, so the answer is B, cementoblastoma. Next, computed tomography or your CT scan X-ray techniques allow the test component to be
viewed in various cross-sectional slices, viewed from different angles, analyzed for chemical composition, none of the above. Very easy question. थोड़ा सा थ्योरी ट्विस्ट करने की कोशिश की है. व्हाट डू यू थिंक विल बी द करेक्ट आंसर? लिखा हुआ है बट अगेन it is viewed in various cross-sectional slices like axial, like sagittal, like coronal. Okay. So these are the various आपके प्लेन्स जिसके अंदर हमको दिखता है. ठीक है, तो एक्सियल, सजाइटल, कोरोनल एंड योर ट्रांसएक्सियल. Okay, transaxial is most commonly referred for CBCT rather than CT. Okay, so correct answer is option A. Okay, so what is the CT scan? It is a powerful non-destructive evaluation technique for producing 2D and 3D cross-sectional images of an object. Okay, इसके अंदर हम dimensions, shape, size, anatomical location, relationship with the anatomy, ये सब देख सकते हैं. Clear? Next, in implants, panoramic radiographs are useful for. पैनोरामिक रेडियोग्राफ का इम्प्लांट्स में क्या यूज है? फर्स्ट चीज हमको पैनोरामिक रेडियोग्राफ या ओपीजी के बारे में जो याद रखनी है वो ये है कि इट इज अ स्क्रीनिंग रेडियोग्राफ. क्या है? इट इज अ स्क्रीनिंग रेडियोग्राफ. क्लियर? सारी चीजें हमको एक बार में देखने के लिए हम ओपीजी का यूज. So option A, ruling out bony pathologies and estimating bone availability. Rough. Performing precise measurements of bone height and width. Can we do it on OPG? No. Selecting the height and width of implants. Can we do that on OPG? No. Detecting all existing anatomical locations. Can you see inferior alveolar nerve and trace it properly on OPG? No. Correct answer is A, ruling out bony pathologies and estimating bone availability. Okay, identify the structure. So the structure that we are talking about is this. Okay, this continuation of slightly radio opaque streaks from the tooth. What is? Hint, seen in hypertensive patient. Option is lamina dura, PDL space, condensing osteitis, nutrient canals. Answer is nutrient canals. Nutrient canals are nothing but engorged capillaries. ब्लड जो आपकी कैपिलरीज होती हैं वो एंगॉर्ज्ड हो जाती हैं. कब हो जाती हैं? जब आपको हाइपरटेंशन हो. क्लियर? सो दिस इज न्यूट्रिएंट कैनाल्स. Diagnose the problem. So here is the problem. क्या प्रॉब्लम है? राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? So my left eye will see the right side and my right eye will see the left side. So problem is where? Problem is right now is in the right side. Okay, can you see this area? Can you see this area? This is a fracture of the zygomatic arch. Fracture of the zygomatic arch. What X-ray is this? This is a jug handle view or also known as submentovertex view. Okay. So mastoid shift, fracture of the zygomatic bone on the right side, fracture of the zygomatic bone on the left side, none of the above. Answer is B, fracture of zygomatic bone on the right side. Okay. What is this? पहले तो बताओ है क्या चीज ये?
क्वेश्चन तो अपन बाद में देखेंगे. This is an X-ray tube. This right here are the filaments. This is a focusing cup. This is the target, tungsten target. ये जिसमें लगा हुआ है वो है copper, good conductor of heat. So structure pointed out by arrow is made up of which metal? It is made up of copper. Answer is copper. Okay. Radiographs of Gary's osteomyelitis show formation of sequestrum, worm-eaten pattern of bone destruction, thickening of the cortex, sinus tract. Answer is thickening of the cortex, which is your onion peel appearance. इसी से आती है onion peel appearance. Clear? So radiographic findings in Gary's osteomyelitis would typically show a localized overgrowth of bone on the outer surface of the cortex. जो cortex है उसके outer surface पे localized growth of the bone. ठीक है? It is supracortical but subperiosteal, smooth, fairly calcified. Okay? इसीलिए इसी को हम onion peel appearance बोलते हैं. Next, radiographic diagnosis of bilateral expansile radio opaque area. तो क्या क्या पूछा है? Bilateral expansile radio opaque area in the canine premolar region of the mandible. Easy. Is it a hematoma? It's not radio opaque. Remaining roots bilaterally, बहुत जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ हो. Torus mandibularis, internal oblique ridge. Internal oblique ridge expansile नहीं है. तो क्या बचा अपना? Torus mandibularis. Torus mandibularis is bilateral expansile radio opaque. Bilateral expansile radio opaque. Okay. Next. When we take X-ray in upper premolar, to locate the lingual root, it can be buccal or palatal root. Okay. I'll just this not lingual, palatal. When we take X-ray in upper premolar to locate palatal root using mesial shift or slob technique, वो root किस तरफ दिखेगी? तो slob technique क्या बोलती है? Same lingual, opposite buccal. हमसे पूछा है palatal root के बारे में. ठीक है? तो सेम लिंगुअल मतलब सेम पैलेटल. अगर मीजियल शिफ्ट किया है तो पैलेटल रूट किस तरफ जाएगी? मीजियली. बकल रूट किस तरफ जाएगी? डिस्टली, ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो व्हेन वी टेक एक्सरे इन अपर प्रीमोलर टू लोकेट पैलेटल रूट यूजिंग मीजियल शिफ्ट, इट विल अपीयर डिस्टल, बकल, लिंगुअल और मीजियल. will appear mesial because it is moving with the tube. Okay, so according to Clark's rule, mesial shift, the object moves mesial. Okay, this patient is a 47-year-old black woman. Again, focusing on the black, negroid race. There were some periapical radio opacities in the anterior region. Periapical
Again, what are they saying? Radio opacities in the anterior region. The diagnosis, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इस तरफ अलग अलग जगह पर बायलैटरली चारों कोने इन्वॉल्व करते हुए रेडियो ओपेसिटीज दिख रही। ब्लैक वुमन है, क्या हो सकता है? अगेन, मिडिल एज्ड ब्लैक वुमन. Is it focal cemento-osseous dysplasia? It occurs most commonly in edentulous area. Periapical cemento-osseous dysplasia, anterior. Florid cemento-osseous dysplasia, chronic diffuse sclerosing osteomyelitis is not bilateral. Correct answer is florid cemento-osseous dysplasia. The highest chance of any dysplasia to convert into a neoplasm is this. चारों arches, upper lower arch, चारों quadrants को involve करता है, middle aged black woman में देखा जाता है. Clear? An air gap technique will generally improve image contrast. Air gap मतलब अगर ये टारगेट है तो इसको थोड़ा दूर पे रख देंगे अपन, टारगेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ा देंगे, उसी को हम एयर गैप टेक्निक बोलते हैं. इंक्रीज्ड टारगेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. An air gap technique will generally improve image contrast because it is used with a small focal spot. The air absorbs scattered radiation. It is used with a small field of view. The scatter is more diverging than the primary beam. The scatter, the long wavelength, is more diverging than the primary beam, that is a short wavelength. Short wavelength travel in a straight line for a longer time. Long wavelength diverts. Okay. Next, the quantum noise in radiography can generally be decreased without increasing patient exposure. कैसे कर सकते हैं? By using intensifying screen with higher absorption, by using intensifying screen with higher conversion, by higher sensitivity film, but that will increase the quantum model. Thicker intensifier screens, yes. थिकर जितनी इंटेंसिफायर स्क्रीन्स होंगी उतना ज़्यादा वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी और उतनी जल्दी आपका पेशेंट एक्सपोजर कम होगा और क्वांटम नॉइज भी डिक्रीज होगी. तो थिकर इंटेंसिफायर स्क्रीन इज द करेक्ट आंसर. आइडेंटिफाई द फॉल्ट. सो दिस हियर इज द फॉल्ट. क्या फॉल्ट है? कुछ नहीं, बस एक्सरे को उल्टा रख दिया है, सिल्वर फॉइल आगे है, फिल्म एक्सपोज्ड from the opposite side. Okay. Next, identify the condition. ये proximal caries जैसा लग रहा है बट ये मिरर इमेजिंग है, तो क्या ये एक्चुअली में proximal caries है? नहीं, ये है आपका, क्या बोलते हैं इसको, को बोलते हैं आडम्बराइजेशन. आडम्बराइजेशन means to look like something else. So right now this looks like proximal or root caries, so that is why it is known as adamberization. But adamberization is the other name for cervical burnout, which you all know. Clear? Adamberization or cervical burnout. The examiner can ask you about this. Very important questions. Okay, so I hope this short and sweet session was of use for you. We tried and get everything on board in these small 25 questions. Okay, and the small 50-55 minutes that we had.
Clear? I hope we are going to see each other soon and I hope your exam is going to be fantastic. जो भी faculties अलग अलग subjects की बोलती हैं please ध्यान से सुनिए. Most of the things are covered in your classrooms. Okay, so thank